फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा आज का वीडियो है ओरियो केक। और ये केक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मेरे आज 23rd की नाइट है और 24th को पापा का बर्थडे आता है। तो 24th को हम जब 12 बजे आते हैं तो हम केक काटते हैं। तो इसलिए मैं ये अभी केक बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। बाय द वे 24th को मेरी बुआ का बर्थडे आता है। सो हैप्पी बर्थडे टू हर एज वेल। So first we need some Oreos and then we need to separate the cream from the biscuit. So I have separated the cream from the biscuit. Now we have to grind the biscuit. Now we have to add milk little by little. Now we have to add the cream. अब आपको इसमें इनो डालना है। तो अब आपको इसे एयर फ्रायर में डालना है। बहुत ज़्यादा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ केक को देखने के लिए। मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा। वैसे मैं अभी आपको बेकिंग बता दूँ कि क्या करना है। आपको पहले ये दोनों चॉकलेट्स को मेल्ट करना है। अगर आपके पास बड़ी वाली है तो एक को मेल्ट करके आप लगा सकते हो अपने केक पे। और फिर जम से डेकोरेट करना है। आपको वैसे चॉकलेट से मेल्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर आप न्यूटेला लगा सकते हो उसमें।
अभी उल्टा है इसलिए थोड़ा ऐसे दिख रहा है। तो अब हम इस पे मेल्टेड चॉकलेट को स्प्रेड करेंगे और फिर जेम से डेकोरेट करेंगे। तो अब मैंने चॉकलेट लगा दी है, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर ही लगाई है, साइड पे मैंने नहीं लगाई है। आपकी विश, आपको लगाना है नहीं लगाना है। अब हम इसे जेम से डेकोरेट करेंगे। ओके, तो अब हम बीच में भी एक लगा देंगे। मैं अपना फेवरेट जेम लगा रही हूँ बीच में, तो बाकी की जेम से मैं साइड में डेकोरेट कर दूँगी। हैप्पी बर्थडे पापा, जेम्स मेरे हाथ में भी। ओके, तो अब मैं आप देख सकते हो मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। आप चाहो तो हर्शीज़ सिरप से भी डेकोरेट है। पापा वेट कर रहे हो। तो पापा, आपका केक बन गया। थोड़ा केक की तरफ भी देख लीजिए। यहाँ नीचे रख दो, नीचे रख रही हूँ मैं। और हाँ, केक काटने से पहले पापा, ये है आपके लिए आपका बर्थडे कार्ड। थैंक यू आद्या। हैप्पी बर्थडे पापा। और मैंने इस पे पापा के ट्रेट्स लिखे हैं। ओके, फादर से करके लिखा है F for fabulous, A for awesome, T for trustworthy, H for helping, E for energy efficient। पापा अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं। और R for reliable। Really, I don't like chocolate cakes. I don't like chocolate cakes at all. But this is one recipe when Aadya makes. It is just like amazing. It is more salty caramel-like taste in it. That's why I like it. And now Akanksha, Aadya's mother, is going to make green tea for me. Thank you.